गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करछि मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम इकोलॉजी रो एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ विषय आम देखा। तो क्लास स्टार्ट करबा पूर्व समस्त को अनुरोध अच्छे मो चैनल को सब्सक्राइब कर एवं वीडियो पसंद थे निश्चय लाइक कर। देख ताले सबुठु प्रथम आम जानिबा पॉपुलेशन ग्रोथ कौन। ठीक अच्छे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कौन द कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन टू ग्रो इन एनॉर्मस particularly when they are introduced in new region having suitable habitat। तो बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ माने कौन गोटे कैपेसिटी है पॉपुलेशन ग्रो करिवार गोटे कैपेसिटी पर्टिकुलरली कौ जगार जो जगार नुआ नुआ रीजन रे बा नुआ हैबिटेट रे जो पॉपुलेशन ग्रोथ करे तार कैपेसिटी केते ताको कह जाय पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक अछि। द रैपिड इंक्रीज इन नंबर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक टू प्रेडिक्ट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स रेगुलेशन। तो बेसिकली जो रैपिड इंक्रीज हम जदि है कौन पॉपुलेशन जो नंबर जदि रैपिड इंक्रीज है सेटा कौन आम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर। ठीक अच्छे। तो कले आम जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो बा तार रेगुलेशन को आम प्रेडिक्ट कर जे सेटा केते मात्रा रे बढ़ुची वर्ष को तार बढ़िबार हार केते एटा आम जानि परिबा। ठीक अच्छे। तो ये गोटे इंपोर्टेंट मध्य देख द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नोन एज डेमोग्राफी। तो बहुत टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आसी पारे तुम। तो जे स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज व्हाट तो दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ठीक अच्छे। तब नेक्स्ट देख रिप्रोडक्शन प्रोवाइड एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। एटा आम समस्त जानिचु जे पॉपुलेशन ग्रोथटा केतेबेले इंक्रीज हुए जेतेबेले रिप्रोडक्शन होता है। किंतु आउ जदि आम जानिबा इन नेचर पॉपुलेशन आर ऑफन रेगुलेटेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। आम एटा मध्य जानिचु जे पॉपुलेशन बढ़िबा बा कमिबा एनवायरमेंटल फैक्टर उपरे मध्य निर्भर करे जहाँकि तुम प्रथम यूनिट रे पढ़ीच। ठीक अच्छे। तो को प्रकार फैक्टर अच्छे सेटा मध्य तुम जानिच है। तब देख ए पॉपुलेशन दस इज ए चेंजिंग एंटाइटी है। तो केमती दिस चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज एट्रीब्यूटेड टू फैक्टर्स सच एज डेंसिटी नाटालिटी मोर्टालिटी सर्वाइवरशिप एज स्ट्रक्चर ग्रोथ रेट एमिग्रेशन इमिग्रेशन एंड अदर एट्रीब्यूट्स। तो जोटा कि आम ऑलरेडी यूनिट 1 रे कभर करिचु। जो मैंने आज नुआ अच्छे से यूनिट 1 मोर मु डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी यूनिट तुम जो पेपर 1 और पेपर 2 दुईटाकर लिंक दे देछि सेठी तुम यूनिट 1 देखिपर जे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कौन। ठीक अच्छे। तो सेठी आम जान नाटालिटी मोर्टालिटी सर्वाइवरशिप ये सब जहाँ जहाँ सब फैक्टर अच्छी एटा मध्य पॉपुलेशन बढ़िबा किंबा कमिबा उपरे निर्भर करे। ठीक अच्छे। तब देख दीज फैक्टर्स आर ऑलवेज इन फ्लक्स as species constantly adjust to season to physical forces and to one another even when the community and the ecosystem seem to be in an unchanging state। The study of changes in the organism number in a population and the factors related to such changes is termed as population dynamics। तो बेसिकली ताले आम population dynamics कौन एटा भी गोटे तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म नंबर। तो गोटे ऑर्गेनिज्म रो नंबर जो किसी चेंजेस आसिला। ठीक अच्छे। कौटे गोटे पॉपुलेशन हो कि फैक्टर्स रिलेटेड है कौन से फैक्टर रिलेटेड हो जहाँ द्वारा कि चेंजेस आसला ताको ताहले कौन कह जाए टर्म कह जाए पॉपुलेशन डायनामिक्स। ठीक अच्छे। तो ये आम जानले समस्ते। तब देखा एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ कौन बा ग्रोथ विदाउट रेगुलेशन है। एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ अर्थ कौन ग्रोथ विदाउट रेगुलेशन। देख ए स्मॉल पॉपुलेशन living in a very large and favorable habitat have a growth rate that depend on the two factor। मनकर गोटे छोटिया पॉपुलेशन अच्छी है एवं गोटे लार्ज फेवरेबल हैबिटेट रे से माने बसवास करती है तार ग्रोथ रेटा कौन हुए डिपेंड करे क्या दुईटा फैक्टर उपर से डिपेंड करे। ठीक अच्छे। बुझीपार तो मो एकदम इजी अच्छे तुम बुझापी चेष्टा कर। गोटे स्मॉल पॉपुलेशन जदि अच्छी से जो स्मॉल पॉपुलेशनटा गोटे बहुत बड़ एरिया रे एवं फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन थी फेवरेबल हैबिटेट थी ताले तार ग्रोथटा रेट जो ग्रोथ रेट अच्छी पॉपुलेशन सेटा एक्चुअली दुईटा फैक्टर उपर डिपेंड करियो। से दुईटा फैक्टर कौन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड द कैपेसिटी ऑफ द पॉपुलेशन टू इंक्रीज। तो कौन गोटे हूँ साइज
पपुलेसन साइज कौन एवं तार कैपेसिटी कौन पपुलेसन ए दुईटा फैक्टर उपर डिपेंड करे ठीक अच्छे सच ए केस अकर्स फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म व्हेन ए न्यू लेक इज फॉर्म और when some deer manage to reach an island where there are no deers earlier जो जगह मनकर आगु डियर नथिबे एमती कौन आइसलैंड जो जगह आसिक मनकर नुआ डियर आसिक पहुँची गले है तो सेठी से माने को प्रकार संख्या मनकर अल्प थी निहाती आने केमी मैनेज करेंगे गोटे विराट बड़ आइसलैंड अच्छी है तो तांकर हैबिटेटा नेचुरल हैबिटेटा बड़ अच्छी सेठी अल्प मात्रा रे डियर अच्छी तो से कौ प्रकार तांकर ग्रोथ हो कि गोटे मनकर लेक अच्छी नुआ लेकटे तैयारी है तो नुआ लेक्रे कौ प्रकार ऑर्गेनिज्म माने बसवास करें ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ आमर जानले आम तापर देख The important periodical production of offspring result in important differences in the way in which population grows. Young one may be added to the population only a specific time of a year, that is during discrete reproductive period. Such population are known as geometric growth. है geometric growth माने कौन where the increment of increase in proportional to the number of the individual in the population at the beginning of the breeding season है geometric growth is the typical pattern of the population growth तो बेसिकली से कौन आउ थे देख मुझे कहूँ शुण young one may be added to the population only at specific time गोटे मनकर स्पेसिफिक टाइम अच्छी गोटे गोटे वर्षर से स्पेसिफिक टाइम रे किछिटा यंग जेनेरेशन कौन है से आसिले पपुलेसन एड हेले दैट इज ड्यूरिंग डिस्क्रिट रिप्रोडक्टिव पीरियड है ताने कौन से रिप्रोडक्टिव पीरियड तांकर अच्छी सच पपुलेसन आर सेट टू बी जियोमेट्रिक ग्रोथ बोली कह जाए है ताको जियोमेट्रिक कह जाए कहीं पर्टिकुलर गोटे सी माने गोटे वर्षर गोटे समय जो समय कि कौन है पपुलेसन इनक्रीज है केमी इनक्रीज है नुआ छोट छोट नुआ मेम्बर मैंने आसिकिना एड हेले ठीक अच्छे तो ग्रोथ है व्हेयर द इंक्रीमेंट ऑफ इंक्रीज इन प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग है तो ता माने कौन अच्छी जिते बड़े ताले से प्रोपोर्शन केमती हम जिते इंक्रीज है एवं जिते बिगिनिंग रे थिला ब्रीडिंग सीजन बिगिनिंग रे जतले पॉपुलेशन जति थिला सेमानक भितर जो प्रोपोर्शनटा हैला ठीक अछि जियोमेट्रिक ग्रोथ इज द टिपिकल पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ हैला देखो इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ द कर्व ऑफ द नंबर्स वर्सेस टाइम बिकम्स स्टीपर एंड स्टीपर है तो जोटा कि आम फिगर आम देखा है ग्रोथ डिपेंड ऑन द बायोटिक पोटेंशियल व्हिच डज नॉट चेंज एंड ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन व्हिच चेंज कंटिन्यूअसली तो बेसिकली देखो ग्रोथ डिपेंड करुच्ची कौन बायोटिक पोटेंशियल उपर डिपेंड करुच्ची जोटा कि कौन केबे भी चेंज हुए ना किंतु एवं जदि आम देखा साइज ऑफ द पॉपुलेशन जदि आम देखा जोटा कि सब बेले कौन हुए चेंज होगा लगे ठीक अच्छे जोटा अच्छी ग्रोइंग लार्जर एंड लार्जर आज ए रिजल्ट द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज स्टीडीली फ्रॉम ए स्लो रेट है तेणु कौन कह जाए जो ग्रोथ रेटा हूँ पॉपुलेशन सेटा हूँ धीरे 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 स्लोली कौन हुए बढ़ा लगे है व्हेन द पॉपुलेशन इज लो आ फास्टर केतबेले हुए व्हेन द पॉपुलेशन इज हाई है देख यहाँ टी आउ थे पैराग्राफटा को बुझापी चेष्टा कर ग्रोथ डिपेंड ऑन द बायोटिक पोटेंशियल व्हिच इज डज नॉट चेंज है बायोटिक पोटेंशियल बिल्कुल चेंज हम ना किंतु एंड ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन व्हिच इज चेंज कंटिन्यूअसली है किंतु साइज ऑफ द पॉपुलेशन कौन कंटिन्यूअसली चेंज हो ग्रोइंग लार्जर एंड लार्जर आज ए रिजल्ट द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज स्टीडीली फ्रॉम द स्लो रेट केतबेले हुए ग्रोथ रेटा जितेबाला पॉपुलेशन एटा लो थी ठीक अच्छे किंतु फास्टर केतबेले हुए जितेबाला पॉपुलेशनटा हाई थी ठीक अच्छे तो देखो यहाँ को आम डायग्रामेटिकाली भी बुझा एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट आर many in laboratory study but in field condition they are scarce as it require hard work for accurate sensoring है ताने कौन आम लाबोरेटरी तो इजिली आम स्टडी कर किंतु स्टडी फील्ड ताको कष्ट है वन सच एग्जाम्पल इज द रिंग नेक्ड
population introduced on protection island, ঠিক ଅଛି, যেটা কি ওয়াশিংটন ଅଛି, the initial population of 8 birds reach to 1898 in 6 breeding season। ତାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପପୁଲେସନ୍ କେତେ ଅଛି, 8ଟା ଅଛି, 8ଟା ବାର୍ଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 6ଟା ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସିଜନ୍ ଭିତରେ ସେ ହେଉଛି 1898 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏନଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଇନ୍ ଦ ହର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଟୁଲ୍ introduced into ଗ୍ରିଜଲି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମ ନର୍ଦର୍ନ ଏବଂ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ତୁମର କାଲିଫୋର୍ନିଆରେ ଅଛି। ଦିସ୍ ଆନିମାଲ୍ ରିଚ୍ ଇନ୍ ମିଡ୍ 1977 ଡେଭଲପ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ 8 animal to population of 150 by 1986। ତାମାନେ କ'ଣ ଅଛି, 77ରୁ 86 କେତେ ହେଲା, 77ରୁ ଇଏ ହେଲା କେତେ, 6 ବର୍ଷ, ଇଏ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି 9 ବର୍ଷ। ତ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ସାଇଜ୍ 8ରୁ କ'ଣ ହେଲା 150 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଜ୍ କ'ଣ ହେଲା ବଢ଼ିଗଲା। ଦେଖ, ଇଫ୍ ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଜ୍ 0। ତ ଯଦି ବାର୍ଥ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାର ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହେଲେ ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, 0 ହେଇଯିବ। ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ, ପପୁଲେସନ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲେ, ମନେକର ଦିନକୁ ଯଦି 10ଟା ଲୋକ 10ଟା ନୂଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ 10ଟା ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା ନା, କଣ୍ଡିସନ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା, କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ତା'ର ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହିଲା। If the population growth at a fairly constant rate, say 1% or 5% or less than 1%, the population size will increase exponentially। ତାହେଲେ ତାକୁ exponentially increase ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। However, if the population does not have a stable age distribution of the growth rate is faster than the predicted from the biotic potential, subsequently if growth persists at a constant rate, a stable age distribution is quickly established। तो এটা देखो, এটা से एक्चुअली से ताको जो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ कर्व अछि ताको से तार डिटरमाइन करिछि केमि, देखो समय अनुसार, देखो नंबर ऑफ द इंडिविजुअल। तो समय अनुसार गोटे नंबर ऑफ इंडिविजुअल तार ग्रोथ रेटटा केमिति होछि, गोटे कर्व टाइप स्ट्रक्चर से करिछि, तापने एई टाइप से स्ट्रक्चरटा करिछि, ठीक अछि। एई जगह कोन हला dn/dt = rn हला, एटा को मने रखि दो, ताको हमें पढिबा कोन। देखो এই ইকুয়েশন বুঝবা আমি, তো ইকুয়েশন অফ এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ কোন দেছি, ফর্মুলা বাই হুইচ এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ অকর্স হচ্ছে dn/dt দ্যাট ইকুয়াল rn হলা, where dn/dt is the population growth rate and the refers to the change in the number হলা। তা মানে কোন dn पर टाइम इंटरवल ताको dt बोली कहा गला हला। तो चेंज इन नंबर dn पर टाइम इंटरवल, प्रत्येक गोटे गोटे टाइम इंटरवल केते ताकर पॉपुलेशनटा केते चेंज हैला ताको हमें डिटरमाइन कलु कोन dn/dt रे, ठीक अछि। तापर देखो बायोटिक पोटेंशियल r इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर टाइम पीरियड पर हेड हैला, एवं जोटा r हैला कोन कोन कला is the increase in the number of individual, केते नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हेले पर टाइम हैला, प्रत्येक समय रे पीरियड पर हेड हैला, पर हेड हैला केते से माने इंक्रीज करले, ठीक अछि। एंड कंबाइन बार्थ रेट एंड डेथ रेट, एवं ता सहित कंबाइन कला बार्थ रेट और डेथ रेट को हैला। n is the number of individual in the population। तब देखो इन द एबव फॉर्मूला ग्रोथ रेट इज हायर इन द पॉपुलेशन विथ ए हाई r compare with one with a low r है। Conversely the growth rate also depend on the n with a slow growth rate when n is small and rapid growth rate when n is large है। तब देखो the formula given above gives growth rate in a population growth exponentially if instead the population size जोटा हमें फिगर में देखिबा at various time during exponential population growth is to be noted, then an equivalent expression is the
इंटीग्रल इक्वेशन जोटा अच्छी एन टी दैट इक्वल टू n0 e टू द पावर rt है व्वेर एन टी हूँ कौन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन आफ्टर t यूनिट है इज द टाइम है t हूँ गोटे यूनिट ऑफ टाइम है आउ n0 कौन n0 इज द नंबर एट टाइम 0 है तो आउ कौन बुझा आर कौन आरटा आम जानी बायोटिक पोटेंशियल एवं टी इज द टाइम पीरियड बीन स्टडी है द कन्स्टांट ई है ये ईटा हूँ आमर कन्स्टांट है इज द बेस ऑफ द नेचुरल लोगारिथम having a value of approximately 2.718 है the term e to the power r is the factor by which the population increase during each time unit and is written as the lower case Greek जोटा होची आम लाम्बडा रे ताको रिटर्न करा जाए माने लिखा जाए ठीक अच्छे दैट इज व्वेन टी इक्वल टू 1 जिते टीटा 1 हुए से को डिटरमाइन करा जाए कौन करा जाए एन टी दैट इक्वल टू n0 e टू द पावर r और एन टी दैट इक्वल टू n0 लाम्बडा बोलिकी ताको डिटरमाइन करा जाए देख एथिरे बुझेबार तो किछि ना एटा सब पूरा एकदम थियोरिटिकली तुमको एक्सप्लेन करके एकदम सिंपल वर्ड रे बुझेइछि ठीक अछि तो ये आम जब बुझीजा यहाँ हूँ गोटे प्रकार पॉपुलेशन कर्व तुम देखिपुच ठीक अच्छे जो टाइमटा बढ़ला पॉपुलेशन साइज मत बढ़ी बढ़ी जाऊँगी है तो ये से कौन देखिए एग्जाम्पल कौन देखिए सपोज ए पॉपुलेशन ऑफ 10 डकवीड ग्रो फॉर 4 days एंड आर इज द 0.20 पर डे है देन ताले n4 हम आमर है कहीं आम 4 days नहीं मैंने n4 हम दैट इक्वल टू 10 इंटू e टू द पावर 0.20 इंटू 4 है यहाँ मन रखी कौ प्रकार फॉर्मूला कौ जगह आसला है 0.20 माने कौन प्रत्येक दिन में केते बढ़ुची आर है जोटा आम पोटेंशियल केते बढ़ुची है एवं फोरटा हूँ तो आम केते दिन है दैट इक्वल टू कौन 10 इंटू 2.22 दैट इक्वल टू 22.2 है तार तार जो एनसरटा है 22.2 है दस द पॉपुलेशन साइज एट द एंड ऑफ 4 weeks इज 22 और 23 डकवीड है तब देखो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कौन सिंपल पॉपुलेशन रेगुलेशन देखो as has been written earlier in the exponential population growth when a population inverts a new area where space and food are in plenty है जो स्पेस और फूड बहुत मात्रा अच्छी तो पॉपुलेशन कौन हम नुआ एरिया रे बढ़िया को लगे द पॉपुलेशन अंडरगोज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हाउएवर द एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलवेज सीम faintly ridiculous because the number of the most organism remain usually constant from year to year. Thus, the population growth curve shows an exponential or approximately so at the beginning having initially a slower growth rate which subsequently get faster and faster. The population then becomes medium size and the growth rate begin to slow down until it finally reach zero when birth balance death है this type of growth curve look like a flat S type रो structure सेटा करता है that is called sigmoid growth curve बोली ताको कहा जाए है the model देखो ये जा आउ थोड़े मुझे कही दूची देखो एटा तुम्हें बुझी भी थिबा एकदम सिंपल अच्छी देख से कौन कही जोटा हूँ व्वेन द पॉपुलेशन इन्वाडेड ए न्यू एरिया व्वेर स्पेस एंड फूड आर इन प्लेंटी द पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो बहुत मात्रा खाद्य भी अच्छी जगह भी अच्छी तो पॉपुलेशन बढ़ला व्हेनेवर हाउएवर द एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलवेज सीम फेंटली रिडिकुलस बिकॉज कहीं द नंबर ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनिज्म रिमेन यूजुअली कांस्टेंट से किंतु एमानकर कौन देखा गला तांकर जो वर्ष तमाम ऑर्गेनिज्म मान जो नंबर अच्छे से कांस्टेंट रहबो दस द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व शोज एन एक्सपोनेंशियल और अप्रोक्सीमेटली सो एट द बिगिनिंग
having initially a slower growth rate ताले slower growth rate है initially which subsequently get faster and faster किंतु slow रहे कौन तापर धीरे धीरे कौन faster और faster ताकर growth rate टा बढ़िबा को लागिबो the population then becomes medium size and growth rate beginning to slow down until it finally reach zero तापर कौन जो धीरे धीरे स्लो डाउन होबो पुणी थरे आउ जीरो स्लो डाउन होला पुणी थरे डाको कौन हो जीरो मध्य हो जिवो तो प्रथमे से इनिशियली स्लो थिला तापर फास्टर ग्रोथ हैला पुणी थरे धीरे धीरे से जीरो को आसिला देन बार्थ बैलेंस डेथ हैला तो बार्थ कौन बार्थ को किए बैलेंस कला धीरे धीरे डेथ ता ही बैलेंस करिवो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व लुक लाइक फ्लैट एस शेप कहीं कह तो प्रथम एटा स्लो रे चलिला धीरे धीरे एटा पर बढ़िला पुणी थोड़ा एटा स्लो हो गला तो एटा कौन है एस टाइप रो स्ट्रक्चर करला ठीक अच्छे तो एटा को सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व बोली कहा जाए द मॉडल डिपिक्टिंग दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड लॉजिस्टिक इक्वेशन है लॉजिस्टिक इक्वेशन बोली कहा जाए है इंट्रोड्यूस जे करथिले किए इंट्रोड्यूस करथिले जे कि रेमंड इंट्रोड्यूस करथिले है तो रेमंड सहित जे रीड in 1920 से इंट्रोड्यूस करथिले द लॉजिस्टिक इक्वेशन इज डिफाइंड as the mathematical expression for the particular sigmoid growth curve in which the percentage rate of increase decrease in linear fashion of population size increase तो लॉजिस्टिक इक्वेशन था माने कौन एटा होची कौन गोटा होची मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो जगह रे पर्टिकुलर जोटा होची हमें सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व जोटा बुझिला हमें जोटी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट कौन होची इंक्रीज हैला डिक्रीज हैला तापर लिनियर फैशन से बा लिनियर बा कांस्टेंट रहिला ठीक अछि The growth rate of the population is determined by biotic potential and the size of the population is modified by the environmental resistance है तो ये हम these factor may include lower population due to mother's poor nutrition कहीं ना आमर ये फैक्टर लो हो गला कहीं माँ मानक जदि न्यूट्रिशन लो है कि हाई रेट ऑफ डेथ है कहीं प्रिडेटर मानकर हो बा पारासाइट हो बा इंक्रीज इन एमिग्रेशन यही मानक कौन होता है धीरे धीरे पॉपुलेशन यही फैक्टर मानक पॉपुलेशन कौन हो धीरे धीरे साइजटा कमिबो आउ मते कौन एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ग्रेजुअली इंक्रीज आज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन गेट क्लोज टू द कैरिंग कैपेसिटी है व्हिच इज द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन दैट इज रिसोर्स ऑफ द हैबिटेट कैन सपोर्ट है तब देखो thus the S shape or sigmoid growth curve which has been above comprise a population that increase slowly at first then more rapidly but it subsequently slow down as environmental resistance increases until equilibrium is reached and maintained. This can be represented by the simple logistic equation that is called dn by dt that equal to rn into k minus n by k. K is the कौन maximum carrying capacity ताको k रे आमे express करलु ठीक अछि The logistic growth curve however shows another basic pattern of the growth term as J-shape growth curve है in the J-shape growth curve the density of the population increase rapidly प्रथम से rapidly increase हो जिवो in exponential manner ये frequently tend to the overshoot of the carrying capacity and then drop back rather sharply as environmental resistance or other limiting factor becomes effective more or less suddenly है तो देखो दिस कर्व कैन बी रिप्रेजेंट बाय द सिंपल मॉडल बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है तो देखो एठी कौन होची जे शेप जब आम देखा जे शेप रे कौन होची जो जगह देखागला कौन द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्रथम रैपिडली इंक्रीज हो इट फ्रिक्वेंटली टेंड टू ओवरशूट एंड कैरिंग कैपेसिटी है एंड देन ड्रॉप बैक तापर कौन ड्रॉप होटा है आज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस और अदर लिमिटिंग फैक्टर बिकम्स इफेक्टिव से केते ड्रॉप कहीं कर कहीं एनवायरमेंटल फैक्टर कौन एनवायरमेंटल फैक्टर हो बा रेजिस्टेंस कैपेसिटी हो एटा मोर इफेक्ट कला
गला तेणु कौन प्रथम सडनली बढ़ला पुणी थोड़े एटा कौन जीव एटा से ड्रप कर ठीक अच्छे तो ये जगह केमती हम तार सेपटा जे सेप टाइप रहीगला धीरे धीरे यही टाइप रहीकिना चलला है तो जे सेप टाइप से तार कौन है इक्वेशनटा तार जो ग्राफटा जे सेप टाइप है तो एक आम केमती रिप्रेजेंट करूँ dn by dt दैट इक्वल टू rn है द इक्वेशन गिव एबव द j shape growth from form is same as the exponential equation except that is a limit in impose on n है तापर देखो next देखो the unrestricted growth is suddenly halted when the population run out the resource like food or space तापर देखो when frost or heat wave or any other environmental intervenes or when the productive season suddenly terminate है तो से समय कौन हम निहाती भाव में कौन जो पपुलेसनटा धीरे धीरे कम कहीं विभिन्न प्रकार एनवायरमेंटल फैक्टर सब कौन ला अफेक्ट कला ठीक अच्छे व्हेन द पपुलेसन रीच द अपर लिमिट ऑफ n इट रिमेन at this level for a while and then a sudden decline take place. It thus produce a relaxation oscillation जोटा होची boom and bust है pattern in density है तो मन रखी यहाँ को रिलैक्सन एंड ऑसिलेशन कहुए है सडनली से बढ़ला पुणी थे कमीगला तेणु तेणु रिलैक्सेशन एवं ऑसिलेशन बोली कहुए सच ए पैटर्न इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेनी पॉपुलेशन इन नेचर सच ए algal bloom annular plant zooplankton bloom some insect and perhaps lemming of the tundra तापर देखो द एस शेप और सिग्मोइड पैटर्न ऑफ द ग्रोथ shows a gradual increase action of the detrimental factor जोटा होचे environmental resistance or negative feedback है as a density of the population increase however in the J shape population growth negative feedback is delay है until right at the end when it goes beyond the carrying capacity है the equation of the S-shape curve differ from that of the J-shape one in the addition of the one expression that is k minus n by k or I minus n by k. A measure of the portion is available limiting factor not used by the population. The S-shape pattern of the growth is followed by a great variety of population represented by the microorganism, plant and animals, both in natural and laboratory population. The S-shape growth form include two kind of time tag. गोटे होची कौन the time need for the organism to start increasing and when conditions are favorable ଆଉ ଗୋଟେ time required for the organism to react to unfavorable condition by altering growth and death rate है the various phase seen in S-shape curve are the lag logistic growth point of inflection तापर देखो environmental resistance and carrying capacity है the lag phase is the time lag necessary for a population to become acclimated to its environment. The point of inflection is the maximum rate of increase. The environmental resistance phase is the slowing the population growth due to limiting resource. The population ultimately reach the carrying capacity condition when the rate of population increase is zero and the population density is maximum. Globally, the human have yet to reach the carrying capacity condition. So this is all about your exponential and logistic growth. ठीक अच्छी तो आज तो ये नेक्स्ट क्लास अधिक पढ़ा थैंक यू.